आज हम बात करेंगे इमेज लोडिंग और कैशे के बारे में, क्योंकि जब भी हम कोई नया ऐप क्रिएट करते हैं जो कि बहुत कम यूज़र्स के साथ में होता है और हमें कम कॉस्ट के साथ स्टार्ट करना होता है, तो हम फ्री सर्वर्स का यूज़ करते हैं जिनमें कि फायरबेस मेन है। और यहाँ पे सर्वर्स की फ्री लिमिट मतलब एक लिमिट में होती है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी दिक्कत फेस करनी पड़ती है। तो आज हम उसी का सॉल्यूशन देखेंगे, जहाँ पे हम इमेज के लिए कैशे इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि हम अपनी नेटवर्क रिक्वेस्ट को भी कम कर सकें और अपना बिलिंग भी घटा सकें। तो स्टार्ट करते हैं नए प्रोजेक्ट के साथ। तो एम्प्टी एक्टिविटी से हम प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि कंपोज एक्टिविटी है। क्लिक ऑन नेक्स्ट, गिव आवर एप्लीकेशन नेम व्हिच इज इमेज कैश। Yeah, it's I think good to go. Here is our targeted version which should be anyone, मतलब कोई सा भी हो सकता है ये। और ये वाला हम ये रखेंगे Kotlin DSL। Finish and it will take some time. Okay, so now it's completed and we move to our Android view, so which is it. And I don't waste a lot of time to writing code or finding something. We simply copy paste from the chat GPT because we are smart developer। मतलब हम स्मार्टनेस दिखाएंगे यहाँ पे भी। हम बेसिकली चेक कर रहे हैं बस कि ये चीज़ किस लेवल तक काम करती है। तो हमने पेस्ट कर दिया और अब यहाँ पे वार्निंग साइन में हम पहले तो रिप्लेस टू लाइब्रेरी कर देंगे और देन सिंक। इसके बाद ये ऑटोमेटिक ले लेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, सो नाउ इट्स डन। और हम इसका वर्जन थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए यहाँ पे आके इंक्रीज कर देंगे। कौन सा है ये वाला कॉइल, तो इसको हम मैक्सिमम पे रख देंगे। Now it's done. Let's move forward with the main activity। तो अभी हम मतलब ऐसा कुछ अलग से नहीं करेंगे, ना ही कुछ एक्स्ट्रा टेक्स्ट ऐड करेंगे, ना ही कुछ एक्स्ट्रा थीम। हम सिंपली टेस्ट करेंगे सिर्फ तो इमेजेस के साथ में ये किस लेवल तक काम करती हैं। तो ग्रीटिंग में ही हम एक काम करते हैं, इसको जैसे का तैसे छोड़ते हैं। एक और कंपोजेबल फंक्शन बना लेते हैं हम यहाँ पे, और जिसका नाम रखेंगे तो composable function image load fun, and then nothing we need to pass here or okay, so there is a spelling mistake होती रहती है। और इसके आगे फिर बस हम जस्ट कॉलम देंगे, कॉलम fill max size। तो यहाँ पे हम fill max size देंगे और सिंपली 2 इमेज व्यू पेस्ट करेंगे जो कि हमें चैट जीपीटी जी से मिले थे। फर्स्ट वन इज दिस वन। ये कॉन्टेक्स्ट भी हम वहीं पे ही बनाएंगे, है ना। सो एक्शन import and then import this one is also, and import again। सो हमने ये 2 चीज़ें इंपोर्ट कर ली। तो हमने ये सारा सेटअप कर लिया है, प्लस यूआरएल भी डाल दिया है यहाँ पे, और इस फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल कर लिया है। इसके बाद हमने इम्यूलेटर में रन कर लिया। अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसको कंप्लीट होने में। नाउ आई एम connecting my personal device and running again, so it is launching device। okay, so why it is showing that screen? Okay, so here is like we are directly calling the greeting function rather than this। okay, this is a preview, sorry। Okay, so just copy it
and then paste inside that surface view. Now we'll start gain. This error we can like ignore for now. Okay, there is something else. Okay, internet permission, sorry. This is also missed from my side. So here we are going user permissions. Okay, internet permission, this one. Okay, run it again. Now I think this time it will launch. Okay, what happened? What happening? Okay, so like I can also provide here modifier, and then here's modifier. There's modifier also. Modifier. Right, there is modifier dot padding, and then inside the inner we can pass inner padding. So that error is also gone. Also here we can modifier, and what about this one size? So okay, so here is modifier also, padding, not padding, modifier fill max size and content scale. Content scale, this one, and circular. Oh no, crop one. CIR circle shape. Okay, not circle shape. Okay, this one. Content scale I want. Import it and then rerun it. Okay, so we just remove it. There's a lot of issues from my side occurring, but still I am like be patient and then run it again and again. Of course, this is a beginner kind of thing, but okay, so it is not loading. Why it is not loading? So I'm just simply going inside the tab, from tab. Okay, I need to just open or something like anything I can share. Oh, there's some other images like Shutterstock which I can. Okay, no, visit, and then I think I copy a wrong link. So there is open new tab, this one, this kind of URL I need to copy, not that one. This is the Google link, but I want image link. Okay, so this image is downloaded, and right now you can see my data is on. So I simply off it and then simply cut it out and then again open it. It's showing perfectly without anything, like I'm going on again and again. Yes, so now it is available offline. Okay, at the some time it will go on. That is the issue. I will fix it in next video. Thank you for watching this video, and we'll meet again.